Good afternoon, everyone. I hope you guys are doing great. Welcome everyone to the Bank Nifty expiry session. My name is Avinash, and we will have Arpit sir with us today for the Bank Nifty expiry session. And as we can see, we saw a good recovery in the market from yesterday's closing. Nifty में भी आज 1% का upside दिखने मिल रहा है हमें. Followed by दूसरे सारे indexes में भी Bank Nifty and followed by Sensex. तो ये सारा feedback and all the updates will be shared to you from our experts, Arpit sir. So we have Arpit sir with us right now. Arpit sir, let me know when we are good to go. Very good afternoon, guys. Just setting up the frame will take a minute or so, and then we'll just start. Great. So I can see a lot of stock queries, guys. We will definitely take your queries at the end, but initially the more focus will be on the trade and then BTST. And after that, if you will have sufficient time, then we'll definitely take up your queries. And if not possible, please make sure you post it on Stockholm. So our experts will be more than happy to answer you there. Darshan, you definitely rightly said Radhi pa Bank Nifty mein. And yes, any view on IPO? Rohit ji, we will have an IPO session tomorrow, and all the details will be shared to you by today. So you can visit Stockholm and check the event section, or else you'll get the feedback by tomorrow. कल ही हम लोग का IPO session होगा. So we are planning to do it a separate session, or we will do it after the expiry session tomorrow. So yes, this is an update for the tomorrow's IPO session that will be on Swiggy. So yes, Arpit sir, over to you. Yes. Very good afternoon, guys. Just want to confirm, Avinash, voice is audible and screen is visible. Absolutely, you are good to go, Arpit sir. Okay, great. So very good afternoon, guys. Welcome to Bank Nifty weekly expiry play. And as we are seeing after a long time, some green color and bullish price action across broader market. So last couple of weeks has been totally downtrend, but आज काफी कल एक हमने last time में अच्छी recovery देखी थी, and post that Nifty, broader market and then Bank Nifty we have seen good pullback. So first starting with Nifty, we'll talk about Nifty. So Nifty में कल वापस 23,800 से हमने एक अच्छी recovery देखी, and आज हमने follow buying देखी है. Because a lot of events are happening globally wise, US elections, US Fed meet is going on, and likewise, so Nifty में अच्छा हमने pullback देखा from 23,850 to 24,444, 24,500 zones. अभी भी 24,500 के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है Nifty. So जितने टाइम से हम बात कर रहे थे पिछले लास्ट वीक तक का हमारा सेल बाउंस का स्टैंड था, बट इस बार पहली बार जो हमने रिकवरी देखी है, अभी एक निफ्टी एक मेजर सपोर्ट ट्रिगर लेवल पे खड़ा हुआ है, जहां से मंदी शुरू हुई थी फ्रेश 24,500 के नीचे से आज वहीं वापस आया है. सो क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी के अगर हम बात करें तो 24,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी. सो वी कैन सी सम फर्दर बाउंस बैक टुवर्ड्स 24,750 लेवल्स. ऑन द डाउन साइड 24,200 24,000 रुपए मेजर सपोर्ट. ये जो रेंज है काफी बड़ी है बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, एंड एज वी हैव सीन एक डेली सेंसेक्स और निफ्टी में अब 1-1.5% का मूवमेंट बहुत नॉर्मल हो गया. 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे एक इंट्राडे बेसिस होने लगे हैं. Talking about Bank Nifty, so Bank Nifty, if we see yesterday, we seen a tremendous pullback from the lower levels, because अगर Bank Nifty का daily chart देखें तो पिछले almost 25 दिन से एक broader range में है. ऊपर में 52,500 एक major hurdle zone है, नीचे में 51,000 51,500 एक support zone है. कल हमने एक अच्छी strong recovery देखी, mainly led by SBI Bank and ICICI Bank. एंड ओवरऑल बैंक निफ्टी पे हमारा स्टैंड ओवरऑल मिक्स ही रहा है, और आज के बेसिस पे सिंस मॉर्निंग वी आर प्लेइंग ऑन द पॉजिटिव साइड. सो आज देखें तो निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम है, बट बैंक निफ्टी एक रेंज में है, 150 से 200 पॉइंट की रेंज में है, बिकॉज कल हमने एक ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रिकवरी देखी थी. सो बैंक निफ्टी का हमारा बायस पॉजिटिव है. लेट मी गो टू द इंट्राडे चार्ट्स एंड टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंड ऑफ इंट्राडे चार्ट्स पे कैसे बिहेव कर रहा है. So let me open up the 15-minute chart. So immediate basis, if we see Bank Nifty 50 to 200 is a major support zone. 50 to 200, 250 एक major support zone है. ऊपर में 50 to 500 वो पिछले काफी टाइम से वहां से रिजेक्ट हुआ है और वहां पे थोड़ा सा पॉज लिया है. On the daily basis also, if we see on the hourly basis also, if we see 50 to 500 is the major hurdle zone. So we have to play out this range. On the lower one, 50 to 250 is the support zone. On the upper one, 50 to 500 is a hurdle zone.
अगर हम 15 मिनट का चार्ट भी देखें तो पोस्ट 9:15 बैंक निफ्टी एक रेंज में आ गया है, नीचे 52,200 का सपोर्ट लिया है, ऊपर में 52,500 का रेजिस्टेंस का हर्डल लिया। तो ये एक रेंज रही है बैंक निफ्टी की सिंस मॉर्निंग। अगर हम ब्रॉडर मार्केट और निफ्टी के बारे में बात करें तो रिलेटिवली हमने आउट परफॉर्मेंस आज देखा है, स्पेशली इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। काफी टाइम के बाद हमें स्क्रीन ग्रीन दिख रही है, डेफिनेटली एक अच्छा पुल बैक हमने काफी स्टॉक्स में देखा है। तो बैंक निफ्टी में हमारा बायस पॉजिटिव रहेगा जब तक 52,200 आई रिपीट 52,222 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी होल्ड करेगा, हमारा बायस पॉजिटिव रहेगा। अपसाइड में 52,450 52,500 से रेजिस्टेंस जोन, सो हमें ये रेंज प्ले करनी पड़ेगी। इंटरडे चार्ट पे थोड़ा सा हमने कूल ऑफ दिखा है निफ्टी के प्रीमियम्स में भी और स्पॉट में भी, सो विल वेट and we'll update on the setup wise. As of now, we are tracking two strikes for Bank Nifty on the positive side, that is 52,200 and 52,300. So I'll repeat, our bias is positive till Bank Nifty holds above 52,222 levels. For this, we are tracking two strikes, that is 52,200 and 52,300 Bank Nifty call strike. So I hope Avinash, you can just pin it down and then we'll update on it. Sure. So we are tracking 52,200 and 52,300, right? Yes, so 52,200 is around 125, 130, 52,300 is around 35 levels. So guys, we have Prashant also in the chat section, and we have already posted it on chat. I'm pinning it as well. So we are tracking a 52,400 call and 52,300 call, right? 52,200 and 52,300. Okay, I'll just recorrect it. Okay. 52,200 is around 125. 52,300 is around 35. Right. So we have made a changes to the strikes, right, guys? So we are tracking 52,200 call and 52,300 call in the Bank Nifty, and we have not officially initiated any trade. We are just tracking. जब हमारे वो buying range पे आ जाएगा, we will definitely initiate the trade. Yes. So, and continue with that, as you see, broader market has seen quite a good bounce back from lower levels. So आज काफी स्टॉक आइडियाज भी काफी सेटअप्स में अच्छे हैं, और एक अच्छी बात ये है कि हमें समझना है सेक्टर्स कौन से प्ले आउट हो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जनरली हमारी स्टडी वाइज ऑल्सो जो पूरे मार्केट के फॉल में जो सबसे कम गिरते हैं, जनरली दे शो स्ट्रेंथ। हमने कपल ऑफ सेशंस के पहले बात भी किया था पीएसयू बैंक्स में, और अगर आप देखोगे पिछले 1 से 2 दिन में काफी अच्छा मोमेंटम हमने पीएसयू स्टॉक्स में भी देखा है। इसी के साथ हम बात कर रहे थे रियलिटी की, so let's look at couple of stock also. Oberoi Realty is one of our top positional pick. हम काफी टाइम से उसको पुश भी कर रहे हैं। सेटअप वाइज मंथली वीकली सेटअप काफी स्ट्रांग है। लेट मी ओपन अप द चार्ट ऑन वीकली स्केल। सो वीकली स्केल पे काफी स्ट्रांग सेटअप है ओबरॉय का। रिटेस्ट किया उसने प्रीवियस ब्रेकआउट जोन को। सो वन ऑफ द कन्विक्शन डिलीवरी आइडियाज दैट वी हैव फ्रॉम अ 15 to 20 days पर्सपेक्टिव इज ओबरॉय रियलिटी। 2010 से 2020 की रेंज में आप बाय कर सकते हैं। 1950 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 2100 और 2150 के लिए आप ओबरॉय रियलिटी कैन गो बाय। सो वन ऑफ द कन्विक्शन डिलीवरी आइडियाज दैट वी आर गिविंग इज ओबरॉय रियलिटी। रियलिटी ओवरऑल पैक अच्छा है और पोजीशनल वाइज काफी अच्छे लग रहे हैं। इसी के साथ हमने एक और बीटीएसटी आईडी दिया है, दैट इज अंबर एंटरप्राइज। तो अंबर एंटरप्राइज अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वीकली सेटअप काफी स्ट्रांग है। लेट मी हैव द डेली चार्ट आल्सो। या सो डेली पे भी अगर देखें तो नीचे एक अच्छा बेस है 6100 150 का। सो अंबर इज वन ऑफ द बिगेस्ट आइडिया। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 6120 का, ऊपर में 6350 6400 के लिए अंबर यू कैन डू बीटीएसटी। सो ओवरऑल रियलिटी एंड अंबर दैट वी हैव इनिशिएटेड अ ट्रेड। इन द मीन टाइम वी हैव सीन सम कूल ऑफ इन बैंक निफ्टी सेटअप। सो अब तक हमने खाली स्ट्राइक्स ही मेंशन किए थे। सो वी आर वेटिंग, वी विल वेट फॉर द सेटअप एंड हम अपडेट करेंगे। Also, Avinash, we can look after a couple of stock queries in the meantime, and as per the setup wise, then we'll play it accordingly. So, Arpit sir, could you please repeat again the Oberoi Realty stop loss and target and what range you have to buy? Oberoi Realty is a positional conviction delivery idea. Stop loss रहेगा 1950 का। 2015 की रेंज में बाय कर सकते हैं। 1950 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 2100 2140 के टारगेट। Also in the meantime I'm tracking Bank Nifty option also कि कौन सा trade will be set up. So I'm just looking at the option chain also and which would be the favorable entry point. हालांकि अगर देखें तो बैंक निफ्टी में हमने ऊपर से 70-80 पॉइंट का कूल ऑफ देखा है। So let's wait for the setup.
एंड हमें ध्यान रखना है ये जो पूरे मूव है बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पुल बैक हुआ है, सो ये इंपॉर्टेंट है कि सस्टेन करता है नहीं करता वो भी हमें देखना पड़ेगा। एंड आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो एवरीडे मार्केट का फ्लेवर इज वेरी वेरी वियर्ड, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव एक दिन पॉजिटिव, एंड दैट हैज बीन द स्टोरी फॉर पास्ट कपल ऑफ डेज। निफ्टी में रिलेटिवली डाउन ट्रेंड था, आज फर्स्ट टाइम हमने पुल बैक देखा है, बट बैंक निफ्टी एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है, एंड सो वी हैव टू प्ले इट अकॉर्डिंगली एज पर द करंट गिवन सेटअप। Overall reality, one is the CDI that we have shared. Along with that, Amber, that is a BTST idea that we have shared. We are tracking Bank Nifty 50 to 222. I'm repeating again that level 50 to 222 is a key level for Bank Nifty on intraday basis. जब तक वो उसके ऊपर हमारा bias positive रहेगा. If it doesn't hold, then we'll try to look after and we need to change our stance. So as of now, we are tracking. In the meantime, as US elections are already going on, the count is going on, and there are news around that Trump is likely to be the president, but it is not official yet. So always keep things in mind. जब भी news confirm हो जाती है, market tends to react also. So guys, do your position sizing accordingly. That is very much important. Coming back to overall market wise, we have seen one good sign, that is India VIX has cooled off. So that is a good sign for market, overall market breadth. But still, market is in that crucial junction zone. So let us see what happens over here. Avinash, as we are tracking 50 to 200 call on Bank Nifty, right now the premium is around 100, 105 levels. हम बताएंगे कि कौन से लेवल पे एंटर कर सकते हैं as per the setup wise. We can take a couple of stock queries in the meantime, and then we can revisit the Bank Nifty trade. Great. ओम प्रकाश जी, डेफिनेटली वी विल ट्राई, या हम दोनों लैंग्वेजेस में कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दोनों क्राउड्स है, राइट? एंड कमिंग बैक टू the elections about US, I guess not officially, but yes, it's 90% confirmed that the Trump has won the elections, and maybe that would be the reason. Maybe we saw some momentum in the market, and yes, we'll move ahead for the few stock queries until unless हमें Bank Nifty में entry ना मिले at the right price that we are waiting for. Right. And yes, let's move ahead then. Signed bought at 1910. Signed. Right. 1910. Right. 1910. Okay. So overall mid cap IT and IT has seen a very good recovery in this market. And if you see the setup wise, long back it formed double bottom near 1700 levels. So positionally, I think एक मेजर जहां से सप्लाई शुरू हुई थी 1910 1920 के वहां से ही सप्लाई जोन शुरू हुआ था साइंट में. सो आई थिंक की लेवल की हर्डल जोन के पास में है वो 1920 के अराउंड. 1920 की क्लोजिंग के ऊपर जल्दी हमें 2000 2020 तक कंप्लीट है. तो वीकली सेटअप इज स्ट्रांग. More momentum around 1920 for an upside towards 2000 2020. Okay. What is your view on Suzlon Arbit, sir? Since it's a very frequently asked and most asked question in every session, right? So Yes. what do you suggest on Suzlon for the fresh entry? Yeah, if you see from a positional perspective, definitely Suzlon has from a base around 60 65 levels. Initially ऐसा होता था जब भी मार्केट करेक्ट होता था तो ये सब स्टॉक्स बहुत जल्दी करेक्ट हो जाते थे. बट ओवरऑल अब ये स्टॉक का नेचर जो हो गया बदल गया है. वीकली एक मेजर सपोर्ट जोन अराउंड 60 65 के अराउंड, एंड आई थिंक फ्रॉम करंट जंक्शन द रिस्क रोड इज फेवरेबल ऑन द लॉन्ग साइड. जब तक ये 65 के ऊपर है बाइस पॉजिटिव रहेगा 70 to 75 के लिए. सो इफ समवन वांट्स टू गो लॉन्ग कैन गो लॉन्ग विद कीपिंग स्टॉप लॉस 65, ऊपर में 72 76 की टारगेट. I hope रोहित जी आपके सवालों का आपको जवाब मिल गया on Suzlon. As I can see you bought it at 68. BHEL. BHEL. Right. BHEL. Yeah. As market has seen a good bounce back, so even BHEL and all the counters have seen a good bounce back from low levels. But if I see the weekly structure, I need to go to the bigger time frame structure. So let me have a look at that. And if you see over here, वीकली स्केल पे कहाँ पे एक मेजर सपोर्ट हुआ करता था 225 230 के वहां से हमने पुल बैक देखा है, लोअर इसको नेगेट किया है. सो आई थिंक एक वापस एक रेंज में फंस जाएगा BHEL. नीचे में 245 240 के एक सपोर्ट है, ऊपर में 255 का हर्डल है. सो आई थिंक फ्रॉम अ बिगर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव रिस्क रोड इज फेवरेबल. ऑन अ इमीडिएट बेसिस अगर करना है तो 245 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर 255 के टारगेट. So there is a question from Sanup ji that he bought Sapnadana
at 950 level. SPAN. Yes. Spandana. Yes. Spandana, yeah. Yeah. Spandana at 1950 and Motilal. Spandana Spurti, yeah. Right. At what level? So basically, he bought at 9050 level at a very high price. So I think that has been the top for the stock and post. If we see the chart also, from past almost 9 months, it is in totally downtrend. So I think guys, better sir, आप exit करने का ध्यान रखिए. कोई भी bounce back आता है towards 420, 450 levels, better to exit because chart पे totally downtrend में है. Better to avoid average मत करिए. कभी भी गिरते हुए काउंटर को हमें average नहीं करना है. स्पेशली जब मार्केट के ट्रेंड अच्छा है और जब भी मार्केट में ट्रेंड अच्छा है और स्टॉक को भी गिरा तो प्रॉब्लम है. सो आई थिंक एनी पुल बैक टुवर्ड्स 420 450 levels better to exit this count. So I hope Sanup ji this answer your queries because since you are holding it from very higher level, please make sure अगर आपको कोई भी potential मिलता है exit, please make sure you exit from the stock. Yes, and coming back to this thing, I'll like to revisit to the Bank Nifty because as we're focusing more on expiry, Bank Nifty as we're discussing, we're talking about level of 50 to 222. I'll repeat 50 to 222. जब तक Bank Nifty hold करेगा हमारा bias positive रहेगा. But पिछले कुछ मिनटों में कुछ देर में हमने थोड़ा ऊपर से cool off देखा है from 350 odd levels. अगर आप देखें support zone वापस 50 to 200 का एक major support zone है जो हम call track कर रहे हैं 50 to 200 का जो पहले 105 110 चल रहा था 120 अभी 88 89 आ रहा है. So we have opened a smaller time frame chart and we are still reviewing it because अभी मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उस दिन का जो व्यू है आपको प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है and there is very good volatility as we are seeing almost every day. कल फिन निफ्टी में हमने अच्छी देखी थी, परसों बैंकेक्स में देखी थी. आज relatively बैंक निफ्टी थोड़ा सा शांत है as compared to the broader market, but still we are looking at 50 to 200 call. अभी 88 89 चल रहा है. थोड़ा सा डिप हमने देखा ऊपर के लेवल से, but we'll wait for the setup because option buying में setup अगर favorable है और risk reward favorable है तभी हम initiate करेंगे. So we are continuously tracking. Bias is so far positive for Bank Nifty 50 to 222. जब तक ऊपर होल्ड करेगा तब तक उसका हमारा बाइस पॉजिटिव रहेगा और उसके लिए हम 50 to 200 का कॉल देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं. अभी 87 88 चल रहा है. सो डेफिनेटली विल अपडेट ऑन इट बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आज प्रीमियम भी जो है काफी कम है बिकॉज आईवीज में हमने थोड़ा कूल ऑफ देखा है जिसकी वजह से प्रीमियम श्रिंक हो गए. एंड बीइंग बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी, सो एज द आउटकम इज गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स इटसेल्फ. सो प्रीमियम से काफी हमने श्रिंक देखा है. सो लेट्स वेट फॉर इट. In the meantime, Oberoi Realty and Oberoi and Amber we have given details. Oberoi Realty is a original idea. One more idea, in fact, last week also we pushed, that was Zomato. However, if we see Zomato, so ऊपर से हमने थोड़ा सा dip देखा है, and as Swiggy को IPO is around the corner and definitely उसके players में momentum रहता है. From current junction, Zomato risk reward is quite favorable. So one more delivery idea that is looking good at current junction is Zomato. आप लोग बाय कर सकते हो 250 से 252 के रेंज में. 240 का एसएल रख के ऊपर 265 और 275 के लिए हमने लास्ट वीक भी दिया था और वहां से हमने थोड़ा सा कूल ऑफ देखा था. बट करंट जंक्शन पे आई थिंक इट्स बेटर. रिस्क रिवॉर्ड इज क्वाइट फेवरेबल, डिमांड जोन के पास में है. एंड एज वी आर सीइंग द ई-कॉमर्स theme and the new age companies is in flavor, Swiggy IP is also coming, so we can see some traction in this stock. I hope Avinash, you have mentioned the levels for that. Yes, Arpit sir, it will be great if you could please repeat again the stop loss and target. Yeah, so buy in the zone of 250 to 252, keeping stop loss of 240 on closing basis for an upside move towards 265 and then 275 levels. So guys, we have shared another delivery idea on Zomato, and since it's a very frequently asked question of the stock, right? Zomato के बारे में काफी queries आती है and हम बार-बार इसे recommend भी करते आ रहे हैं. So there is another delivery idea on the same stock on the Zomato itself. जो अर्पित सर ने अभी just suggest किया, we have to buy it around the current market price. It's trading near something around 254 to 55 level, I guess. And with the stop loss of 240, target for the upside will be 265 and then 275. So I'll just repeat again guys, हमें Zomato buy करना है 254 के लेवल्स पे जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है. स्टॉप लॉस रहेगा 240, टारगेट अपसाइड पे रहेगा 265 और फिर 275.
So Arpit sir, could you please update on the Bank Nifty trade if we? Yeah, absolutely. So I'm looking at the chart. So हम 52,222 जो एक level है 52,200 जो support zone है, Bank Nifty वहीं आया है अभी. But as of now, chart पे there is no reversal. So we are waiting for the setup 52,200 को call हम track कर रहे हैं. Because generally what is the thing is उस दिन के trend में जो हमें play करना होता है वो important है. हमें setup मिलेगा तभी हम दे पाएंगे. उसके साथ में हम put का chart भी देख रहे हैं. थोड़ा वहाँ पे spike हुआ है. But overall at market, Bank Nifty particularly being in expiry day, it has been in a range. हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि नीचे 200 का सपोर्ट है, नीचे ऊपर में 450 का हर्डल है. तो ये रेंज हमें प्ले करनी पड़ रही है. So we are still waiting for the setup in Bank Nifty. 50 to 200 का कॉल अभी चल रहा है 75-80 के अराउंड. थोड़ा सा कूल ऑफ हमने देखा है. So we'll wait for the setup. 50 to 200 के नीचे ही हमारा स्टैंड चेंज होगा. तब तक हम ट्रैक करेंगे. सेटअप मिलेगा तो डेफिनेटली विल अपडेट ऑन इट. बिकॉज सिंस मॉर्निंग हमने काफी अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी की बाइंग साइड में ट्रेड्स में नहीं मिली है. बट स्टिल विल वेट फॉर द सेटअप. जैसे सेटअप रहेगा हम अपडेट करेंगे बिकॉज दैट इज अ प्राइमरी थिंग. बट गुड थिंग इज दैट टुडे अलोंग apart from bank nifty there is very good momentum across stocks. So at least stocks में जो अपॉर्चुनिटी है try to play out that. 2 दिन पहले तक ऐसा हो रहा था कि पूरा मार्केट भी पेन में था और इंडाइसेस तो डेफिनेटली पेन में थे. सो हमें अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में नहीं मिल रही थी. बट एटलीस्ट टुडे वी आर सीइंग गुड मोमेंटम इन स्टॉक्स. सो बेटर टू टेक द मोस्ट ऑफ इट. And for the bank nifty trade, we'll definitely update. Great. So meanwhile, Arpit sir will continue with taking few stock queries, and in between हमें अगर कोई भी opportunity दिखता है trade लेने का, So continuously we are tracking. I have put on the wall and put side both side I am tracking. So जैसे favorable setup मिलेगा because even we want that at least we get the some swings in bank nifty. We are really trying a level best. So definitely we'll update on it. Great. So your view on Hindustan Zinc? Zinc, good momentum we have seen in metal space as a whole in last couple of days. But let me have a chart on Hindustan Zinc. Yeah, so if I see this chart setup wise, Hindustan Zinc on the daily chart, the stock is down, and if you see the range wise, bigger hurdle is 50. 54, 540 is the major hurdle zone, and there's a corporate action also, that is OFS. So I think chart wise एक major support है 500 का, ऊपर में 540 का hurdle है. So I think better to wait. Chart setup is not that great. जब तक 525 540 नहीं करता तब तक better to wait. Arpit sir, what is your view on Ola Electric? Ola Electric, since its listing, the stock has already, I think, half from its all-time high. Chart setup wise, still it is in downtrend, and I think better to wait. Don't try to catch a falling knife. जब तक 82 83 नहीं निकलता है, I would suggest avoid this counter. 83 84 major hurdle zone है, so better to avoid that. And just to add to this, let me revisit Bank Nifty because I'm seeing some pullback. So let me have a look whether we can get some opportunity. So Avinash, first I'll just take a couple of minutes for the Bank Nifty trade. And if we get some opportunity, we'll initiate a trade over there, and then we'll come back to the stock queries. Sure, Arpit sir. Yeah, so I'm just tracking call 50 to 200, guys. I'm repeating 50 to 200 call. I'm tracking. Bank Nifty हमने dip देखा almost 100 point का नीचे थोड़ा recovery आई है. So this dip is being bought into or no? Let me have a look. So 52 200 का कॉल चल रहा है 94 95 around. So let me have a look. Yeah, so some recovery I've seen, but still we'll wait for a minute to see its price action, and then we'll try to play out this swing. So let me have a look, and क्या favorable रहेगा, then we can play it accordingly. Guys, we will definitely try to share the trade. अगर हमारे potential entry दिखता है, हमारे risk reward favorable रहेगा, then definitely we will initiate the trade. So yes, Arpit sir. Yeah. So I think we can initiate Bank Nifty trade 50 to 200 call. Buy in the zone of 85 to 95. Right now it's quoting around 97, 98. I'll repeat. Bank Nifty 50 to 200 call. आप buy करें 85 से 95 की range में. 60 का SL रहेगा, ऊपर में 135 और फिर 160 के टारगेट पे. I'll repeat. 85 से 95 की रेंज में बैंक निफ्टी का कॉल बाय करें. 60 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 135 और 160 के टारगेट. So guys, we have initiated a trade on Bank Nifty. हमें 52,200 का कॉल बाय कर रहे हैं.
And the buying range will be around 85 to 95 with a stop loss of 60. The target for the upside will be 135 and then 160. So guys, हमने बैंक निफ्टी 52,200 का कॉल इनिशिएट किया है. हमें उसे खरीदना है 85 से 95 के बीच में. स्टॉप लॉस रहेगा 60 और टारगेट उसका पहला रहेगा 135. अगर 135 अगर क्रॉस होता है तो 160 भी देख सकते हैं हम. Yes. So purposely we have given a small stop loss itself because as it's in a range, so we want to play this range. And अभी 90 to 93 चल रहा है. It has been triggered. So the buying level has been triggered. Stop loss हमने mention किया 60 का. वो आप ध्यान रखिए. अपसाइड में जैसे swings रहेंगे उसके हिसाब से हमें play करना. Right. So I hope guys आप सब लोगों को trade initiate होगा. It's currently trading here 87, 88. So please make sure you put a strict stop loss of 60. And आपके buying range के ऊपर अगर 5-10 पॉइंट भी ऊपर जाता है, please make sure you trail your stop loss. Every time we say the same thing, so at least you will not make loss from here, right? Yes, absolutely. So as the trade is open, first we'll focus on the trade for a couple of minutes, and then we can again go back to the stock queries. Avinash. Sure, Arpit sir. So we were waiting to at least we have got some comfort at least because we were waiting for some dip. So dip आया है. That's why we have initiated the trade on the lower band of the trade. जैसे हम बोल रहे हैं 52,222 एक major level है बैंक निफ्टी में, and that we have played it out. So that is very important. And जिसके वजह से हमें वो ध्यान रखना है. So 85 वाला वापस 98, 99, and that range we have to play. Guys, keep this thing in mind. That is very important. So guys, जिन्होंने भी 80, 86, 87 के रेंज में बाय किया होगा, it made a high of 98, I guess 98, 99. Please make sure आप लोग जो भी ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, you put a strict stop loss of whatever we have suggested of 60. And जैसे ही ऊपर जाएगा, trail your stop loss to your buying range or a little below to that. So Arpit sir, since we see a IPO that is recently started, Swiggy from today. So Yeah. do you have anything to add in it? इससे स्विगी के IPO आने से आपको क्या लग रहा है? जोमेटो या ऐसे ही कुछ स्टॉक्स होगा? So generally, whenever any IPO comes in, so उसके जो peer players होते हैं, peer comparison होते हैं, definitely they are in the news. And as we all know, market is a supreme power and it is very quick. It already starts reflecting things way before one anticipates. So generally, उसके exact comparison में एक ही player है listed space में, वो है Zomato. They are the two currently the badshahs of the food delivery platforms. So already वो listed नहीं है, so जो listed में हमें उसी को play करना पड़ेगा. So Zomato हम जैसे ऑलरेडी बोल दिए कि प्राइस एक्शन वाइज भी काफी मेजर सपोर्ट जोन में है. हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसा इसका प्लान आउट होता है सब्सक्रिप्शन. अगर इसका सब्सक्रिप्शन वाइज बेटर प्लान आउट होएगा तो डेफिनेटली वी कैन सी सम एक्शन इन द रिलेटिव स्टॉक्स आल्सो. Zomato में ऑलरेडी आज हमने 4 से 5.5% का मूव देख लिया है. So in terms of IPO wise, as Swiggy is coming up, Zomato definitely would be in action. Also one thing is important कि कैसे उसकी फॉलो अप रहती है, क्या उसका सब्सक्रिप्शन रहता है, what is the demand, and likewise. But chart wise, definitely from a Zomato perspective, we can definitely add. Swiggy का हमें couple of days देखना होगा कि कैसे plan out होता है और कैसे subscription wise इसके demand is there in the market. Great. So just an update, guys. जो भी trade हमने initiate किया था, it's trading near 105, 106 level. So Arpit sir, what do you want to add in it? Into this? Yes. For the bank trade, as we were waiting for the dip, we got the dip. We have entered that trade near that support zone. 52,222 is a level that we are watching out. हमने 85 से 95 के रेंज में दिया है और वही अभी चल रहा है अराउंड 100, 104 हमारा, वापस अभी 95. So clearly we can see it's a move of 10 to 15 points only, but that is also very much important because option buying may, as we all know by the property, it's one time you will make money out of 3 times. But if you're able to make money consistently, that is very much important. So guys, keep churning this small movement also. At least आपके लिए beneficial रहेगा. And as we are heading towards 3 p.m. also, so likewise, nowadays we see movement before 3 p.m. only, not after 3 p.m. So better as we see some churning, so keep on churning it, guys. 3 p.m. भी आ रहा है. So we'll take a call on this at what level to exit. But at least आप लोगों को जो movement मिल रहा है, try to play that 108, 109. I think better to book profits, guys, because I think good 20 point swing we have seen in Bank Nifty.
rightly said Arpit sir. Guys, इन्होंने भी 85 86 के लेवल पे बाय किया है. It made a high of 109, right? So what you can do is you can book your profits. अगर किसी को अभी भी अगर होल्ड करना है, you can please trail your stop loss. Absolutely, that's very important. Yeah, Right. that's very important. So please, you can partially book your profits and trail your stop loss to 95 or 90, I guess. So आपका risk बहुत कम हो जाएगा यहाँ पे. At least you will take money from here, right? अभी भी still trading near 109, 1010, right? 1010. So I hope final 130, होगा profit book होगा. 1130, 1114. Right. So all I can say is that's the power of good entry point and some patience that we have to keep in mind and on screen while executing any option trade. यही अगर हमने 85 की जगह 115 में दिया होता तो हमारा risk reward favorable नहीं होता. Right. So this is something that we have to keep, and I think definitely it's been quite a long time we have been associated with each other. It's been more than a year and so. So आप लोगों को भी पता है हमारी स्टाइल कैसे है. But guys, one thing is important, profit book करना बहुत important है और stop loss mechanism follow करना बहुत important है. This week is going to be action packed. There are a couple of things. कल इवेंट के बाद फेड मीट रहेगी एंड लाइकवाइज लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर. सो एवरी डे मार्केट में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होने वाला है. Tomorrow we'll have Nifty expiry. So likewise, some other things will keep going on. But important is you do with the right intention and with the right risk mechanism. Great. I can see a lot of messages from our clients. They have made some good amount of money from this trade. तो guys अभी भी 100 के लेवल पे ही चल रहा है. And दर्शन जी प्लीज अवॉइड फ्रेश एंट्री एज वी हैव ऑलरेडी सजेस्टेड कि एक रेंज में मूव हो रहा है 15 से 20 पॉइंट के एंड हमें वो ऑलरेडी मिल चुका है. सो getting entered at this level will definitely be a very good option. So I would suggest please avoid fresh entry as of now. जिन लोगों ने भी 85 और 87 के रेंज में बाय किया है, you can book your entire profit और आप partially कर सकते हो. That will be your call, but हमने ऑफिशियली प्रॉफिट बुक करने का कह दिया 110 109 पे, आई गेस. सो यस, दिस इज इट फ्रॉम आवर एंड, आई गेस, फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग. एंड इसके अलावा हमने एक बीटीएसटी भी दिया एंड 2 डिलीवरी आइडियाज भी दिए, राइट. द बीटीएसटी इज ऑन एम्बर एंटरप्राइज एंड द डिलीवरी आइडियाज ऑन ओबेरॉय रियल्टी एंड अनदर वन इज ऑन जोमेटो, राइट. सो गाइस प्लीज फोकस ऑन दिस स्टॉक्स. एंड जैसे हमारे एक्सपर्ट्स काफी दिनों से यही कहते आ रहे हैं कि मार्केट में हर बार स्टांसेस चेंज हो रहे हैं, राइट. देयर इज अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, राइट. सो प्लीज मेक श्योर आपको जो भी पैसा बन रहा है आप पैसा बना लीजिए, राइट, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ न्यूज कमिंग अप, राइट. जैसा कि आज ट्रम्प के इलेक्शंस का न्यूज आया, इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट अ मार्केट, राइट. सो काफी सारी चीजें हैं इन लाइफ. So इन चीजों में भी अगर हम पैसा बना पा रहे, so it's a very good thing, I would say, right? So I guess that's it, guys, from our end. Anything more you want to add, Arpit sir, over here before we wrap up? Just a closing note. I think a lot of things have been shared by Avinash also. Just one thing: have a clear mind, book your profits, and look for fresh opportunity on a new expiry day. So happy trading, guys. That's all from our side. We have closed up the Bank Nifty trade at 102 105 levels. We made a high of around 110 levels. So a small profitable session, but at least our important thing, ideas already shared kar diya. Looking forward for tomorrow's Nifty expiry, guys. So that's all from our side. Thank you so much.